We started this journey long time back when me and Amreen Irfan, we saw many people sitting on the roadside. That hit us that why these people are sitting here. There is nothing where they can sit or take a shelter, at least in the extreme weather. So we decided that both of us join hands and do something for this hospital, which is an icon. It's the largest hospital in Punjab. Your hospital opened to the public in 1871, nearly 150 years ago. So this carries a lot of legacy, a lot of history behind it, and a lot of our well-reputed teachers, very big names have worked in this institution. Mayo Hospital is a landmark building of the colonial period, but sadly the building has not been kept very well. The place was in shambles. Some of the buildings were really torn in very bad condition because they're such old buildings and there's so many patients there. They were putting bricks under the beds. They were using shopping bag as suckers. So we were just shocked that what is going on here. I thought, no, we must do something, maybe very little, but we have to do something to improve the situation for all these people who are in misery. पहले तो हम समझे कि शायद ये ख्वाब है क्योंकि इतने बड़े अस्पताल को एक सॉर्ट ऑफ एनजीओ खुद आ रही है और चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही है कि हम इसका ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि जहाँ पर एक एटीट्यूड चेंज को लेके आएंगे तो हमारी हमें दिली तौर पर खुशी हुई कि अल्लाह का शुक्र है कि इनको हमारा ख्याल आया. I decided that we are going to do the very first 2 operation theatres of the cardiac surgery. So I decided to sponsor this project on my own, and that was our first project. My friend Zaida Ahsanuddin decided to do the ICU and the general ward, and for the rest of the unit we collected money, and it came out to be so good. Their contribution has been very significant. I mean, you obviously need to have very clean environment to work. You need to have clean environment to stay. You need cleaner environment for your patients really. You need a good environment always has a very good impact on your morale. It was a totally new feeling. We felt हमने बहुत महसूस अपने अंदर एनर्जी महसूस की काम करने की कि अगर हमारे लिए इतना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है तो हमें भी और ज़्यादा अच्छे तरीके से मरीज़ों की खिदमत करनी चाहिए. उन्होंने बेसिकली हमें भी दे दिया कि जो कुछ वो हमें करके दे रहे हैं हम उसको कितना मेंटेन कर सकते हैं, उसको कितना सस्टेनेबल बना सकते हैं. उससे जो एक महज़ब और साफ़ सुथरा माहौल मरीज़ को मिलेगा उससे आधी बीमारी तो उसी से ठीक हो जाएगी जब वो एक साफ़ सुथरे बिस्तर पर साफ़ सुथरी इमारत में साफ़ वार्ड में जिसका साफ़ फर्श होगा, साफ़ दीवार होगी, जिसका बाथरूम साफ़ होगा. इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो फ्रेंड्स ऑफ मेयो की है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, आपने इसको मैच करना है बाय सर्विस डिलीवरी, बाय प्रोवाइडिंग फ्री मेडिसिन. तो अभी तक तो जितनी इन्होंने वार्ड हमें रेनोवेट करके दी हैं हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होती है और हम पूरा उसको करने की भी कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पर पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज, बेशक वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो या सर्जिकल. हमले से हम लोग बहुत खुश हैं. बहुत अच्छा अरेंजमेंट सारा है. एक रिस्पेक्ट वाला जो एलिमेंट है वो बहुत अच्छा लगता है. अपने घर से ज़्यादा इज्जत महसूस होती है यहाँ पे. More people, more donors kept coming. They kept looking at our work and kept coming to do various wards. The Friends of Mayo have really done wonders now. They have done so many projects. 3 projects I am doing. North Medical Ward I have completed. The cancer ward that I am doing. And more people are now joining in because they've realized that instead of making separate hospitals, it is always good to do something in a government hospital because we have everything there. We have a culture here that every patient is attended by many attendants. They are sleeping on the lawns and in the verandas and they create a problem.
So we've been able to produce a rest house sort of a thing where they can rest. So that will create a nice environment in the hospital without the congestion. So this sort of Musafirkhana, we want to build 2-3 more. There are so many other wards and other departments which need to be upgraded. And the next upcoming projects, which we have already identified, the most important project is the burn unit, specifically for the PEDS. That is PEDS emergency, which will be connected to this burn unit and PEDS surgical ward. Then there is East Medical and ENT ward. If you ask me that why should people give donation to FOMH, I say because of the results achieved and the trust they have created in their mind and heart. So that's why people come and they willingly donate and donate in crores. We are looking forward for more donors to make this hospital one of its kind. We are a platform where they all can put together their efforts and make this hospital a heaven for many poor patients who are getting treated there. नहीं अब दोबारा बताएं कितने बजे कहाँ से घर कहाँ आया? घर हमारा फतेहगढ़ में है। हाँ वहाँ से हम आए हैं सरबस। ठीक है। सरबस से फिर हम आए हैं जनाब हॉस्पिटल से फिर हम आए हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल, फिर वहाँ से यहाँ आए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इनको म्यो हॉस्पिटल ले जाएं। इसकी उम्र कितनी? उम्र 6 साल। ठीक, चलो अब हम इलाज करते हैं। Assalamu alaikum. Thank you KEMCANNA and all our dear friends who generously donated for this burn unit and this project. आप सब ने जिस तरह इसके लिए फंड्स इकट्ठे किए और हम सब के लिए एक ऐसे ज़रिया बनाया जिससे हम गरीब लोगों को और म्यो अस्पताल के उन सब बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छी सहूलत मुहैया कर सकते हैं। ड्यू टू सर्टेन रीजंस हमें इसके अंदर कुछ और फंड्स की ज़रूरत है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम था, जिसके लिए हमें स्पेशल फिल्टर्स और उसके लिए ज़रूरत थी ऐसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम की जिसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया और कंट्रोल और इन्फेक्शन कंट्रोल की वजह से वी हैड टू यूज़ दिस फिल्टर स्पेशल एयर कंडीशनिंग सिस्टम ताकि वहाँ पे एयर फ्लो हो और वहाँ के अंदर जो मरीज़ हैं उनके लिए बेहतर और साफ़ आबो हवा हो। दैट्स वाई वी यूज़ दिस एंड वी अनफॉर्चुनेटली हमारा बजट जो है दैट गॉट डिस्टर्ब ड्यू टू दैट। दिस इज़ नॉट वन यूनिट विच इज़ वी आर डूइंग विथ यू। This is a project of 4 different units in which there is pediatric emergency, pediatric burn unit, pediatric ward with ICU and 5 operation theatres which we are renovating. So this is a whole complex which we are doing, Alhamdulillah, with the help of several donors. I want to thank you for your all support and trust with us, and we look forward for all of you to meet you soon in December to inaugurate our burn unit, our pediatric surgical tower, inshallah.